Hello students, welcome to maths class. Myself is Kalicharan and even you can call me as KC sir. Today actually we are going to discuss about the HCF and LCM. HCF and LCM. Not only HCF, LCM. The brief history of HCF, LCM. HCF, LCM का detailed study so that we can attempt any questions regarding HCF, LCM. HCF और LCM के उसका definition start करके each and every problem I'll explain you briefly so that there will be no confusion. आपके दिमाग में HCF और LCM का confusion कुछ भी नहीं आता. So we'll go in detail and I'll make sure that throughout your experience, throughout your journey, you will never face any kind of problems in HCF, LCM. Or for your kind information, this HCF, LCM is a very delicate part of your real number. Real number के सबसे important, what I can say, the maximum number of times your questions repeats from this chapter is HCF, LCM. तो HCF, LCM के आज हम सर्जरी करने जा रहे हैं. Means detailed discussion about HCF, LCM. If you listen carefully, I can give the guarantee that you can attempt all the questions of HCF and LCM. चलो तो start करते हैं HCF, LCM का सर्जरी. HCF एंड LCM. तो आज का डिस्कशन क्या है? HCF, LCM. कोई भी अगर नंबर दिया आपको, तो कोई भी नंबर, तो हम दो नंबर पहले लेते हैं. लेट्स सी, सपोज 2, 4. हमारे पास दो नंबर है और ये दो नंबर के हम HCF और LCM फाइंड करते हैं. तो HCF, LCM से पहले फुल फॉर्म क्या है HCF का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? फर्स्ट आई एम फाइंडिंग HCF, देन आई विल फाइंड LCM. ओके, लेट मी फाइंड फर्स्ट HCF. चलो पहले हम HCF फाइंड करते हैं. F stands for factors. What is F? इसमें जो HCF है, इसमें तीन टर्म्स है, तीन लेटर्स है. HCF, HCF. So every letter has its own significance. एक एक लेटर का कुछ मीनिंग भी है, बट द मीनिंग इज वेरी सिंपल. वो मीनिंग बहुत ईजी है. F stands for factors, C stands for common, and H stands for highest. तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Now we'll go in detail about highest common factor. ये सब क्या है एक्चुअली, किसके ऊपर? इसके लिए सपोज फैक्टर्स तो आपको आइडिया है शायद. चलो एक हम नंबर ले रहे, एक नंबर 2 और एक सपोज एक नंबर ले रहे 4. 2 and 4. अच्छा, 2 के फैक्टर्स क्या क्या है? अच्छा, 2 का फैक्टर्स मतलब 2 जो टेबल में आ रहा है, किसके किसके टेबल में 2 आ रहा है? 2 1 के टेबल में भी आता 100%, और 2 के टेबल में भी आता है. तो 2 के फैक्टर्स कितने में? 2 है. क्या क्या है? 1 2. सिमिलरली 4 कम्स इन 1 2 एंड 4 टेबल. ये तो आया होगा. तो 2 जो टेबल में आता है कौन से वाला टेबल? 1 2. मीन्स 2 कम्स इन टेबल नंबर 1 मीन्स 1 2 जा 2. 2 comes in 2 table also, 2 1s are 2. So what I can say, 1 and 2, these are the factors of 2. तो ये factors हो गया हमारे पास. जो भी नंबर दिया उसका factors लिखना. अच्छा, 4 also, what are the factors of 4? 1 2 and 4. So these three are the factors of 4. तो 4 के factor क्या हुआ? 1 2 4. चलो नेक्स्ट लेटर इज द C. C stands for the common. अब आपको ये देखना, व्हाट आर द फैक्टर्स दोज आर कॉमन. इसमें से कॉमन कौन से? कॉमन मतलब जो रिपीटेड. अच्छा, 1 इसमें भी 1 है, 1 इज प्रेजेंट इन बोथ, सो आई कैन से 1 इज ए कॉमन. क्यों? मुझे कॉमन देखना. और एक भी कॉमन है, और एक कॉमन क्या है? 2 भी है. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? Common factors. So what are the common factors? 1 and 2 both. 1 and 2 both are common factors, right? Okay. So
सो कॉमन फैक्टर्स ओवर, कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं हम हाईएस्ट। अब ये जो दो कॉमन फैक्टर्स है, आउट ऑफ दिस टू कॉमन फैक्टर्स विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2, दो में से हाईएस्ट वाला यही है। सो दिस इज कॉल्ड द HCF। हाउ टू फाइंड? तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप जो भी नंबर दिया वो दो नंबर की क्या फाइंड करना, फैक्टर्स फाइंड करना, और वो फैक्टर्स में से हाईएस्ट ढूंढना, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। नाउ आई कैन राइट HCF of 2 and 4 is equals to 2. I think getting HCF of two numbers. What are those two numbers? 2 and 4. That means the HCF of the two numbers is 2. Clear? Now let me take one more example. Find the HCF of, suppose the numbers are 20 and 45. I want to find what is the HCF of 20 and 45. What I told you, first I have to write the factors of 20. The factors of 20 is, I think 1 20 is 20. I can write 2 10 is 20. I can write 4 5 is 20. I can write 5 4 is 20. I can write 10 2 is 20. Even I can write 21 is 20. तो जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 5 10 एंड 20. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. तो इसका मतलब 1 के टेबल में भी 20 आ रहा, 2 के टेबल में। सो व्हाट आर दिस? दीज आर द फैक्टर्स। ये सब क्या है? फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है? 20 के फैक्टर्स है। अब मुझे 45 का भी फैक्टर्स लिखना। सो लेट मी राइट द फैक्टर्स ऑफ 45. 1 45 is 45. 3 in 3 table also I am getting 45. In 5 table also I am getting 45. In 9 table also I am getting 45. In 15 table also I am getting 45. And in 45 table also I am getting 45. Now these are the factors of what? Factors of this 45. And these are the factors of 20. तो फैक्टर्स हम लोग निकाल दिए किसके? 20 के फैक्टर्स, 45 के फैक्टर्स. So these are the factors of 20, these are the factors of 45. But I have to not find the factors, I have to find the highest common factor. You tell me what are the common factors? Common factors are, see, one is common to both. Okay, then comes 4 is not there. After 1, then it comes 5. 5 is a common factor. Next, I think no other numbers are there. Now my common factors are 1 and 5. Clear? Therefore, HCF of 20 and 45 is equals to 5. I think what it? First you have to find the factors of 20. Then you have to find the factors of 40. After finding the factors, ये दो factors के highest factor निकालना. Highest factor very simple. दोनों में जो common factors है वो common factors में से highest factor क्या है? अब मुझे मिल गया highest factor 5. Therefore my HCF is 5. So this is all about the HCF, highest common factor. Now after finding the highest common factor, I think you'll find, if I give the questions, if I want to find highest common factors, find the HCF of 21, and if I find 35, ये दो नंबर के फैक्टर्स निकालते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो 21 वी कैन राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 21? 1 3 7. आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 35?
Factors of 35, again 1. This 21 also is the factor of 21. 1, 5, 7, then 35. Now I wrote both the factors. You tell me what are the common factors? The common factors are 1 is common and this 7 is also common. But out of this 1 and 7, which is the highest? Highest is 7. Therefore, HCF is equals to only 7. HCF of these two numbers. What are the two numbers? 21 and 35 is equals to 7. Hope I think all of you understood. तो HCF का फर्स्ट क्या है? आपको फैक्टर्स लिखना, उसमें से हाईएस्ट नंबर देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ नेक्स्ट we'll discuss about the LCM. About LCM. First, what is the LCM? Lowest common multiplication. Lowest common multiplication. If I take three numbers, let me take 2, or let me take the bigger numbers. 15. Suppose if I take 15, then 20, then 30. These are the three numbers, okay? And I want to find what is the LCM of 15, 20 and 30. Let me find. This is the lowest common multiplication. Lowest common multiplication. So write the table of 15. 15 के table लिखिए आप. 15 के multiples. Multiples का मतलब table. 15 1 जा 15. 15 2 जा 30. 15 3 जा 45. 15 4 जा 60. 15 5 जा 75. Then 15 6 जा 90. 15 7 जा 105. Like this and so on. These are what? Multiples of 15 I have written. 15's multiples. Now multiples of 20. 21 is 20. 22 is 40. 23 is 60. 24 is 80. 25 is 100. 120 and so on. Factors of means multiples of 20 over. Now multiples of 30. Let me write multiples of 30. 31 is 30, 2 is 60, 90, 120, 150, okay, then 180 and so on. What I have written? I have written the multiples of these given numbers, okay, multiples of 15 over, multiples of 20 over, multiples of 30 over. अच्छा multiples हम क्यों लिखे? Because I need to find LCM. मुझे LCM find करना. Whereas LCM stands for lowest common multiplication. Therefore, I am writing the multiples of the given numbers. चलो multiples हो गया. Okay. Lowest common multiples. Now let me check. What are the common multiples? Common multiples. 30 is not there. 45 is not there. 60 is there. Here 60. Here also 60. Here also 60. So now common multiples. What are the common multiples? First number I got 60. Next up, if I go on writing, then next number is your 120. If you go on writing like this, you'll get it. Next number is 75, 90, 105. Now 120 is here. 120 is also here. And 120 also here. So I can write 120. Okay, and so on. If you go on writing, you will get some other numbers also. Now you tell me, out of these two multiples, which is the least common multiples? Out of these two, least मतलब सबसे छोटा. Least common multiplication is, I think, is में 60. ये दो में से least वाला कौन सा है? Least वाला यही है, 60. Understood? Whenever you are finding the LCM, जब भी आप LCM फाइंड करते हो, मल्टीप्लिकेशन लिखो पहले, जो भी नंबर दिया और दो नंबर्स के मल्टीपल से लिखना. आफ्टर राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन, यू आर टू सिलेक्ट which is the least common multiples. तो कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट वाला कौन सा है वो लिखना.
Understood? Okay. Now next, let me do one two problems, more problems. So क्या आपका concept clear होता? देखते. LCM of 100 and suppose 64. Okay, 164. Again same thing. Or if I want to write 164, if let me write double digits, then go for the triple digits. LCM of 12 and 14. Let me find the LCM of 12 and 14. First, what to do? I try the multiples of 12. Let me write multiples of 12. 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60. Like this, we will go on writing the table. Okay, still you can proceed. To 120, like this you will go on continuing. Okay, now 14. Multiples of 14, मतलब मुझे 14 का टेबल लिखना है. Like this will continue. Multiples of 14. Now you select which is the common and the least. सबसे तो दोनों में है, लेकिन लीस्ट वाला सबसे छोटा वाला देखते पहले. Which repeats first? 36, 42, 56, 72. No, this is the first one what we are getting. So therefore, LCM of that 12 and 14 is equals to 84. If you continue further, there are some numbers what you will get common definitely. But my LCM is, I have to select the least one. मुझे least वाला selection करना. So the least one is 84. So what I can write? LCM of 12 and 14 is 84. Clear? Okay. Now let me take a triple digit. Same thing. Suppose if it is given, find the LCM of 100 and 500. Right? The multiples of 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, like this. And multiples of 500 is 500, 1000, 1500, like this will continue. Very simple, you can say now, what is the LCM? LCM of 100 and 500 is nothing but which is common? Yes, first one is this one only. So I need to check the numbers which we are writing afterwards. The first number which repeats, that's all, finish. LCM over, right? This is the general method, but sometimes, not sometimes, most often, what is usually asking, find the HCF and LCM by prime factorization method. HCF and LCM by which method? By prime factorization method. This is very very important. अब हम LCM HCF फाइंड करते बाय एक मेथड है. द नेम ऑफ द मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF LCM कैसे निकालते हैं? ओके, सो HCF एंड LCM बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना, प्राइम फैक्टर्स लिखना, क्योंकि मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको प्राइम फैक्टर्स पहले लिखना. प्राइम फैक्टर लिखने के बाद जो भी कॉमन है, वो जो भी कॉमन है, लेट मी अगेन राइट, completely different of this one. This H actually stands for highest common factor,
Okay, whenever you are finding the HCF, let me find the HCF of 120 and 35. What I told you, to find the prime factors. To find the prime factors of 120, let me find 2 6 are 12, 0, 2 3 are 0, 2 15, 3 5. Okay, this can be written as 120 is equals to क्या लिखना? Look at here, what I am getting, 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Okay, now this becomes 2 cube 2 to the power of 3 into 5. मेरा फैक्टर्स मिल गया, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 to the power of 3 into 5. नेक्स्ट 35, चलो 35 का निकालते हैं. 35 I can get 5 and 7 only, so this can be written as 5 into 7. Okay, 5 into 7. Now you tell me what is your HCF. अब आप ये बताइए HCF क्या है दोनों का. 120 35 का HCF क्या है. पहले तो हम चेक करते हैं जो कि कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है. 120 और 35 में कॉमन ये 5 ही है, so HCF is equals to 5. Okay, if let me take one different example because we are getting the same power, दोनों में पावर सेम आ रहा है. अब डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें HCF क्या है फाइंड करते हैं. Find the HCF of if it is 40 and suppose and 140 and 160. Let's find the HCF of 40 and 160. Find the factors of 40. 220, 210, 25 over 5 1 will get right. So this 40 can be written as 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 5. Okay, now next, how many 2 are there? 2 कितने, 3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power of 3 into 5. तो 40 के फैक्टर्स हो गया. अब 60 का हम फैक्टर देखते हैं. 160 का 160 is equals to 280, 240, 220, 210, 5. How many 2? 160 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. How many 2? 1 2 3 4 5. 2 to the power of 5 into 5. अब यहाँ HCF क्या है देखते हैं. What will be the HCF of these two? HCF is equals to, first I'll select the common terms, common numbers. Common numbers क्या क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है. राइट, अब ये दो में से जो कॉमन है, select the powers. Power is 3, power is 5. Now you have to select, this is important, where to write to, let me write here. This is very important. This is important what I am writing. Okay, while finding the HCF, what you have to write, you have to select the least power of the common प्राइम नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 में से, ये जो 2 में से एक पावर 2 to the power of 3 है और एक पावर 2 to the power of 5 है. While writing the answer, out of these 2, you have to write only the least power. Keep in mind, better if you write this one. लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर, जो कॉमन प्राइम नंबर है उसमें से
जो पावर सबसे छोटा है उसको ही लिखना। ओके, तो ये दो में से किसका पावर छोटा है? 2 to the power of 3 पावर छोटा है। सो आई राइट 2 to the power of 3 इंटू, इनका तो पावर 1 ही है, इंटू 5। दैट मीन्स माई HCF इज 8 into 5, that is 40. 40 is my HCF. Get it? 8 5 are 40. Let me write here. 2 into 3, that is 2 to the power of 3 into 8, which gives me 2 into 2 into 2. 8 into 5, which is 8 5 are 40 is the HCF. I hope you're understanding, right? So this is the HCF. So remember, whenever you're finding HCF, फाइनल कंक्लूजन, HCF आप जब भी फाइंड करते हैं, फर्स्ट यू फाइंड द फैक्टर्स, मीन्स प्राइम फैक्टर्स। अब राइट इन द प्राइम फैक्टर्स, इफ यू आर गेटिंग राइट इन द टर्म्स ऑफ पावर, अगर ऐसा है तो मल्टीपल्स नंबर ऐसे रिपीट हुआ तो उसको पावर में लिखो। ऐसे पावर में आ गया, ये दो पावर में से अगर सेम पावर दोनों का अगर डिफरेंट है, एक का पावर 3 और एक पावर 5, आई हैव टू सिलेक्ट द लीस्ट वन। रिमेंबर दिस वन, लीस्ट पावर। लीस्ट पावर मतलब छोटा जो पावर है वही लिखना, कीप इन माइंड, लीस्ट पावर को लिखना। तो ये दो में से लीस्ट पावर था 2 to the power of 3 into 5, then finally the answer. Okay, clear? So this one must be remembered while finding the HCF. Now let's find the LCM by the same method. Which method? Prime factors method. So now I'm going to find the LCM by the same prime factor method. So find the LCM, find the LCM by which method? Prime factorization method. हम तो ये HCF फाइंड करें, अब हम LCM फाइंड कर रहे हैं। कौन सा मेथड? मेथड तो सेम है, विच मेथड? प्राइम फैक्टर से मेथड। ओके, लेट मी टेक द नंबर्स टू फाइंड द LCM. 35, सपोज फर्स्ट वन इज 35 and 105. These are the two numbers and I am going to find the LCM of these two numbers. So let me first find 35. चलो पहले 35 का फैक्टर्स निकालो। कौन से टेबल से? 5। आप 5 लो, नहीं तो 7 भी ले सकते, जो जिसके भी टेबल नहीं आ रहा, 5 या 7, तो 5 7 जा 35 हो गया। चलो नेक्स्ट 105, 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा और 21। अब जो भी फैक्टर्स है देख के लिखो। 35 इज इक्वल टू व्हाट आई गॉट, अब तो सामने है 5 into 7। चलो 5 into 7 हो गया 5। 105 इज इक्वल टू 5 into 3 into 7 over, clear? Right. Now LCM is what? Least common multiplication. Proof of right. Now I want to find what is my LCM. HCF over HCF में क्या था? लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर। चलो अभी इसमें तो व्हाट आर द नंबर्स हियर? Here remember, here every number I have to write. If it repeats, I discuss. 5, here also 5, write that 5. Consider each number. Here also 7, here also 7, write 7. This 3 also I have to write. This 3 also I have to write, means I am not leaving a single number. But if the same numbers are there, then I have to think of their powers. Think of their powers. But remember, ये दोनों का पावर 1 ही है, इसलिए मुझे दो में से एक लिखना। और एक एग्जाम्पल में और थोड़ा क्लियर हुआ था। Now 3 5 जा 15, 15 7 जा 105. So LCM of 35 and 105, what I got? I got 105. Clear? Now let me change the number so that we'll discuss some more typical questions.
right? I have to find the LCM of, suppose, 160 and suppose 200. I have to find the LCM of 160 and 200, right? Let me find first factors of 160. 160 factors क्या देखते हैं? 2 8 जा 16, 0, 2 4 0, 2 20, 2 10. Hope you are getting 2 5 over 160. So 160 is equals to what I got? I got 160 is equals to 2 into 2 into how many? 1 2 3 4 5 into 2 into 5. This is 160. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, so this further I can write 2 to the power of कितने 2s are repeated? 1 2 3 4 5. So I can write 2 to the power of 4, 5, 2 to the power of 5 into 5. तो 160 का हो गया. अब वो देखना 200 का. चलो 200 का फाइंड करते. लेट मी फाइंड 200 हियर. 200, 250, 225, 5 5. So 200 is equals to how many 2? 1 2 or 3 4 5. How many 2? 2 to the power of 3 into 5 square. Now this here you are to know how to find the LCM. Now look at it. In LCM, what I told you? First to let me check each number, each and every number. अच्छा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन ये दो 2 में से एक ही मुझे लिखना, या तो 2 to the power of 5, नहीं तो 2 to the power of 3. लेकिन ये लिखना कौन सा? आपको लिखना हाईएस्ट पावर of the prime number. This is a very important what you must have to remember, जो कि ये आपको याद रखना. जैसे कि हम LCM में बताए थे, least power of the LCM means least power of the common prime number. HCF में हम क्या लिए थे? जो कॉमन नंबर आया था उसका जो पावर है, कौन सा पावर लिए थे? द लीस्ट पावर, सबसे छोटा वाला जो पावर लिए थे वो LCM HCF में सबसे छोटा वाला पावर लिए थे. लेकिन इसमें क्या देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर. हाईएस्ट पावर क्या है? देखो ये 2 भी है, ये भी 2 है, लेकिन इन दोनों में से पावर किसका हाईएस्ट है? पावर इसका हाईएस्ट. Then I have to write this one. So LCM is equals to LCM of what are the numbers? 160 and 200 is equals to 2 to the power of 5. समझ में? ये दो में से मुझे ये सिलेक्शन करना जिसका पावर सबसे बड़ा है. अगर सेम नंबर रिपीट हुआ जिसका पावर सबसे बड़ा, मुझे वो नंबर सिलेक्शन करना. तो 2 to the power of 5 हो गया. अभी और भी रिपीट है. नेक्स्ट चेक इट. यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर तो यहाँ है, तो इंटू 5 स्क्वायर. ये हम नहीं ले रहे, ये ले रहे. क्यों? मुझे लिखना पावर जिसका पावर हाईएस्ट है. सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ? 2 into 2 into 2, 5 times becomes 32 into 5 square is 25. 32 into 25. Now multiply 25 into 32. This is your 750 plus 25 to the 50. 800 is your HCF. Sorry, LCM. Now the LCM of 120 and 200 is 800. Try to remember these two key factors. फिर से हम बता रहे, ये दो की फैक्टर्स आपको याद रखना
कभी भी ऐसे रिपीट हुआ तो ये दो में से अगर आप HCF फाइंड कर रहे हैं तो दोनों में से लीस्ट वाला पावर लिखना है, जिसका पावर सबसे छोटा है। अगर आप HCF फाइंड कर रहे हैं, HCF जो फाइंड कर रहे हैं दोनों में से जिसका पावर छोटा है। अगर LCM फाइंड कर रहे हैं दोनों में से जिसका पावर बड़ा है। ट्राई टू रिमेंबर दिस वन। इफ यू रिमेंबर दिस, then this LCM and HCF is nothing for you. You can do very fast without any reason, without any problems. Next is what is the relation between HCF and LCM? अब ये HCF और LCM के बीच में कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशन between HCF and LCM means this one. Sometimes what he'll ask you, find the HCF and LCM and verify LCM into HCF is equals to product of the two numbers. तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? समटाइम्स व्हाट विल आस्क, फाइंड द HCF एंड LCM। दो नंबर देता है आपको, वो दो नंबर का आपको HCF फाइंड करना, LCM फाइंड करना, लेकिन कुछ वेरीफाई भी करना। क्या वेरीफाई करना? वो दोनों का LCM और वो दोनों का HCF अगर मल्टीप्लाई करें, जो दो नंबर आ रहा वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन क्वेश्चन। द नंबर इज सपोज it's let me take 16 and 25. First what to find? First I have to find what is the HCF of 16. Then I'll find what is the LCM of first HCF of these two, then LCM of these two. Okay, right, let me find what is the HCF first. First I am finding HCF 16 by any method you can do. 16 we can write in the prime factors, 2 into 2 into 2 into 2. So this gives me 2 to the power of 4. HCF over means 16 factors over now 25. 25 we can write 5 into 5 which is 5 square. Okay. Now tell me what is your HCF? HCF is equals to HCF of 16 and 25. हाँ, HCF में हम क्या बताए थे? कॉमन फैक्टर्स, कुछ कॉमन फैक्टर्स है नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, यह नंबर 2 है और यह नंबर 5 है। देयर इज नो कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1। दोनों में यही नंबर है, कॉमन है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर यही है। HCF over now I have to find the LCM of 16 25। चलो ये 16 और 25 का क्या निकालते हैं? LCM। अच्छा, LCM में क्या लिखना? ईच एंड एवरी नंबर, पूरे नंबर तो लिखना। तो यहाँ क्या है? 2 to the power of 4 इंटू यहाँ क्या है? 5 to the power of 2। 2 to the power of 4 is 16, 5 square is 25। 25 into 16 if I multiply, 25 6 are 150, 400. Now what I'm getting? I'm getting LCM 400, LCM 400, HCF 1. So what I got? I got HCF of these two number is 1, LCM of those two number is 400. So now I have to check LCM into HCF। चलो हम LCM लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS में क्या दिया? LCM into HCF. What is LCM? 400. What is HCF? 1. 400 into 1 is 400। लेफ्ट साइड का मेरा आ गया। LCM HCF का आंसर क्या है? 400। चलो राइट साइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स के प्रोडक्ट, टू नंबर्स के प्रोडक्ट। लेट मी फाइंड द प्रोडक्ट।
चलो अब ये प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वो जो नंबर क्या था, फर्स्ट 16 इंटू सेकेंड नंबर क्या था 25। इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू अगेन आई गेट 400। मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, आपको जो नंबर दिया वो दो नंबर के एलसीएम और वो दो नंबर के एचसीएफ फाइंड करना, जो कि हम फाइंड करें। एलसीएम क्या आया 400 और एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ 1 आया। चलो ये हो गया एचसीएफ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो। चलो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर मेरा है 400। ये किसके साथ इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। लेट मी राइट हियर, टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। गिवन नंबर मतलब जो नंबर दिया, नंबर क्या दिया 16 25, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 25, आंसर क्या है 400। इसका मतलब this is one of the very important logic what you can think, this is the formula also, you can mathematics you can remember as a formula. What is that formula? Let me write that formula. The formula is, you have to remember because while doing the exercise this is required. HCF of two number into LCM of those two number. Let the number be A and B. Instead of A, B, number will be given. Any number will be given. HCF into LCM is equals to A into B. A into B means जो भी नंबर दिया उन नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये जो ए बी था ना, यहाँ जो ए बी था, ए बी के प्लेस में कुछ नंबर देता, विल डू द एक्सरसाइज। ए बी के प्लेस में कुछ नंबर देता, वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ प्रूव हो गया। HCF the two numbers, what the numbers given 16 25, HCF of AB में 16 25 जो दिया था, LCM of again 16 25, HCF LCM हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का तो हमारा आंसर क्या है 400 है। तो ये साइड का आंसर 400 है, इज इक्वल टू A इंटू बी। ये भी हम मल्टीप्लाई करें, ए बी का मतलब कुछ भी नहीं, जो नंबर दिया, डोंट गेट कंफ्यूज। ए बी इज नथिंग बट द नंबर व्हाट इज गिवन टू यू। जो भी नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई करना। बाय टेकिंग दिस वन विल डू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। अब जब एक्सरसाइज करते हैं एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला, दिस मेथड, दिस थिंग्स ओनली वी हैव टू अप्लाई। यही अप्लाई करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यही एप्लीकेशन कब, जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। स्टिल वन मोर इज देयर अपार्ट फ्रॉम दिस वन, that is the most important, which comes most often in 3 marks questions, that is how to prove the irrationality. एक नंबर आपको देता, prove that root 2 is an irrational, or prove that root 3 is an irrational number, or prove that 2 plus root 3 is an irrational number. Like this is the last section. After this we'll start the exercise and I'll go in detail in exercise, each and every problem, and if any doubts you can just in the comment box you can give, comment box में आपको जो भी डाउट है लिख सकते हैं, and your doubts will be immediately clarified. So till then, have a good day.